The net weight of the telescope tube's OTA is 9.7 kg. Go-to mount का payload capacity 13.6 kilo का है, so you are way below its payload capacity. Now let's come to the accessories that the telescope comes with. Welcome everyone to another enchanting video. Today I have brought two high-end telescopes from the Celestron's inventory. One of them is the 9.25-inch optical tube assembly and the other one is the Celestron 11-inch optical tube assembly. We will be mounting both these telescopes. We'll be unboxing both these telescopes and mounting it on the Celestron Advanced VX Go-To Mount. So let's not waste any time and let's begin with the unboxing and assembly of these two telescopes and the go-to mount. खुल जा सिम सिम। टेलीस्कोप के बॉक्स से निकले हैं दो ऑप्टिकल ट्यूब्स. Celestron's 9.25 and the 11-inch telescopes are one of the most affordable large category telescopes available in the market. We will now be mounting both these telescopes on the Advanced VX Go-To Mount. They are perfect for both visual astronomers and astrophotographers. The 11-inch telescope, however, gathers 41% more light than the 9.25-inch OTA. The Schmidt-Cassegrain optical design eliminates all chromatic aberrations, which makes both these telescopes perfect for even entry-level astrophotographers. We will now be unboxing the Celestron Advanced VX Go-To Mount box. This is the Celestron's Advanced VX Go-To Mount brown color box. Let's begin with the unboxing. खुल जा सिम सिम। Brown box के अंदर से निकली है इतनी सारी चीजें. Let me explain to you everything one by one. सबसे पहले stainless steel heavy duty tripod. There is a counterweight that comes with it. It's pretty heavy counterweight. इसका shaft, accessories का tray, again metal. This is the altitude adjustment screw to elevate your go-to mount to a certain angle. ये इसका screw दिया है. ये इसके दो locking screws है वापस. Hand pad controller. इसके plastic holders है hand pad controller के. ये इसका एक car गाड़ी वो में जो cigarette का lighter आता है उससे if you want to power your go-to mount with that, they've given you this also. But I would personally not recommend you do that. I would not recommend you use a cigarette lighter to power your go-to mount. थोड़ा सा भी प्लस माइनस इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा भी प्लस माइनस होगा आपका गो टू माउंट का इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाएगा. Avoid that. Just use a plain simple AC/DC adapter. Celestron does not provide an AC/DC adapter with their go-to mounts. We will give you an AC/DC adapter separately from our side to you. The power requirement for this go-to mount is 12 volt 3.5 ampere. We will give you the correct AC/DC adapter to power this go-to mount. Again, there's another plastic adapter for the handpad controller. This is your go-to mount. This go-to mount does not come with a polar scope. You have to buy the polar scope separately. Even if you buy the 9.25-inch and the 11-inch telescope OTA along with the go-to mount, you still do not get the polar scope. You have to buy the polar scope separately. Now let's begin with the assembly of this go-to mount and then we will move on to mounting the two telescopes on this particular go-to mount. I will also explain to you specific technical details of both the 9.25 and the 11-inch OTA telescopes further in the video. Let's begin. Before we start with the assembly, मैं ये go-to mount को सुला देता हूँ, थोड़ा गिरने के chances है. Stainless steel का very heavy tripod. This is a 2-inch diameter. इसका जो diameter है stainless steel का 2 इंच का है. It gives you ample of room to spread your legs. The more the legs spread, the better the stability of this go-to mount. This tripod along with the go-to mount can easily take the load of the 9.25-inch OTA and the 11-inch OTA. इसका height increase करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है क्योंकि जब एक बार go-to mount आएगा, go-to mount के telescope ऊपर telescope आएगा तो वो काफी heighted already हो ही जाएगा. So I am not increasing the height of the go-to mount. But if in case you do increase the height of the go-to mount when you release the screw and when this comes out, please ये screw और nut bolts को ज़्यादा tight मत करना. जितनी जरूरत है उतना ही tight करिए. वापस collapse कर देते हैं. Spread the legs again.
परफेक्ट। टेक द गो टू माउंट। यहाँ पे एक पिन दिया हुआ है, ये पिन ये वाले स्लॉट में जाएगा। ये जो नीचे का जो एक स्लॉट है विच इज़ अ लिटिल डिफरेंट दैन द सर्कुलर मेटल शेप हियर, वो सीधा वहाँ जाएगा। इट्स वेरी हैवी। जब आप भी असेंबल करो प्लीज़ ध्यान रखना, गलती से छूटना नहीं चाहिए हाथ से। ये आ गया। सबसे पहले ये जो स्क्रू है ब्लैक कलर का, इसको लॉक कर दीजिए। ये लॉक हो गया मेरा गो टू माउंट। नाउ टेक योर एक्सेसरीज ट्रे। एक्सेसरीज ट्रे को ये स्क्रू खोलिए, इट विल फॉल ऑफ। टेक योर एक्सेसरीज ट्रे, डालिए अंदर। सॉरी, ये ऐसे जाएगा, करेक्ट, ऐसे जाएगा। वॉशर डालिए अंदर, स्क्रू लॉक करिए। एक्सेसरीज ट्रे भी लॉक हो गया ट्राइपॉड के पैर के साथ। परफेक्ट। ये आपका ऑल्टीट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू। टेक दी ऑल्टीट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू और ये गो टू माउंट के पीछे एक होल है, इसको अंदर डालिए। वंस यू स्टार्ट इंसर्टिंग दिस, ये स्क्रू जैसे ही अंदर जाएगा ना, ये वो गो टू माउंट को पुश करेगा एंड इट विल स्टार्ट टिल्टिंग अपवर्ड्स। ये आपका लैटिट्यूड रेंज है फ्रॉम 0 to 77। आई थिंक इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम 0, आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम 7 डिग्रीज टिल 77 डिग्रीज। ये ऐसे जाएगा। अभी अगर मैं इसको डालते रहूँगा ना अंदर, ये ऊपर जाएगा। ओके, इट विल कंटिन्यू गोइंग अप, बट देयर इज अनदर स्क्रू हियर। इसको लूज कर दीजिए सो दैट दिस माउंट कैन फर्दर गो अप। लूसन दिस स्क्रू। अगर ये मैंने लॉक कर दिया ना, ये मैंने समझो कि ये पूरा लॉक कर दिया। ये देखिए, ये मैंने पूरा लॉक कर दिया। ओके, और जा रहा है, समझो कि ये मैंने पूरा लॉक कर दिया। नाउ इफ आई टर्न दिस ऑल्टीट्यूड एडजस्टमेंट स्क्रू ना, ये आगे जाएगा नहीं, थोड़े टाइम पे जाके टाइट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अभी देखो आगे नहीं जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग फर्दर अहेड। सो आई हैव टू नाउ लूसन दिस स्क्रू in order for my altitude, my equatorial mount to go further up to the North Star. ये मैंने लूज कर दिया। Now insert this inside. मेरा मुंबई का latitude 17 to 18 degrees आता है। My North Pole star is 17 to 18 degrees. Let us assume right now that my North Star in this direction. मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ 17-18 degrees पे। I have crossed 10. I've crossed 15. And I'm coming close to 17-18 degrees. After you do this, ये एक प्लास्टिक कवर है, इसको खोलिए। इसके अंदर आपका पोलोस्कोप फिट होता है। आई विल शो यू द पोलोस्कोप राइट नाउ। ये आपका सेलेस्ट्रॉन का पोलर फाइंडर स्कोप ऐसे बॉक्स में आता है, इसका मैनुअल है। ये आपका पोलोस्कोप, ठीक है, पोलोस्कोप। ये मैंने पीछे का प्लास्टिक कैप खोला यहाँ से, एक डायरेक्टली गोज इनसाइड और नट से टाइट हो रहा है। यू ऑल यू हैव टू डू इज रोटेट। ओके, ये आपका आ गया पोलोस्कोप। पोलोस्कोप के अंदर देयर इज अ रीडिंग दैट हेल्प्स यू गेट योर पोल स्टार विद इन द पोलोस्कोप्स रेंज। दूसरा, दिस फ्रंट पार्ट ओवर हियर दैट यू सी, दिस इज द फोकसिंग मैकेनिज्म ऑफ द पोलोस्कोप। When you see a star, when you try to get the star, the pole star inside the poloscope, this is your focusing mechanism to get your sharp pinpoint object. Now, एक बार समझो कि आपने ये पोल स्टार अंदर लेके आया, या फिर समझो कि आपने पोल स्टार आपको दिख रहा है पर वो पोल स्टार थोड़ा राइट या लेफ्ट पे, आपको उसको सीधा, आपको उसको सेंटर में लाना है। तो rather instead of moving the entire go to mount ऐसे लेफ्ट राइट करने के बदले, there are two more screws given over here. ये दो स्क्रूज है, horizontal adjustment, एक यहाँ पे फिट होगा और एक ये बाजू ऑपोजिट डायरेक्शन में फिट होगा। अभी ये दो स्क्रू से क्या होगा, once you get your correct elevation, ये स्क्रू से once you get your exact polar elevation, ये दो स्क्रू से you can now drift your entire go to mount a little to the right and a little to the left with these two screws, and to get your pole star right in the center of your polar scope. That is all there is in the polar scope. Now let's move on to the shaft. Take your shaft. यहाँ पे सीधा लॉक होगा। Make sure आपका threading सही जाए। If your shaft is not fitting in, if it's not rotating smoothly, which means that the threads are not interlocked properly, make sure they interlock properly. ये हो गया आपका shaft connected, done. ये shaft के नीचे का एक स्क्रू है, ये स्क्रू आपको तब फिट करना है एक बार आपका काउंटरवेट अंदर आ गया ना, उसके बाद। This is your counterweight, is pretty heavy. ये स्क्रू को खोल दीजिए ताकि ये सर्किल खुल जाए, ये होल खुल जाए। ये आ गया अंदर। अभी इसको साइड से लॉक करिए। इफ इन केस इफ आई डोंट पुट दिस स्क्रू, अगर मैंने नीचे नहीं रखा और मैंने इसको गलती से छोड़ा और अगर ये स्क्रू लूज हुआ तो ये सीधा नीचे गिरेगा, या तो फिर किसी का पैर तोड़ेगा या तो किसी का टाइल तोड़ेगा।
इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए ताकि अगर अभी ये लूज और गिरे ना तो यहाँ पे लॉक हो जाए, ये स्क्रूज को होल्ड करेगा। ओके, डन। ये गो टू माउंट के ऊपर देयर आर अ कपल ऑफ पोर्ट्स गिवन। वन इज द guiding port, एक है hand pad controller का port, and there are 2 extra auxiliary ports given for additional accessories. These 2 are the extra auxiliary ports given for extra accessories. Let us fix the hand pad controller port. ये हो गया। ये एक और केबल दिया हुआ है जो आरए और डेक को कनेक्ट करता है। ये डेक पोर्ट में एक वायर यहाँ पे डालिए और दूसरा वायर यहाँ पे साइड पे डालिए। सॉरी, ये हो गया आपका गो टू कनेक्ट। ये एक प्लास्टिक का क्लैंप जैसा दिया हुआ है दैट डायरेक्टली पुश फिट्स। इसको पुश करके अंदर डालोगे ना तो ये स्टेनलेस स्टील के रॉड के ऊपर क्लिप हो जाएगा। आई एम नॉट पुटिंग इट इनसाइड क्योंकि अगर मैंने अंदर डाल दिया तो शायद निकले ना। और ये उसका ये एक बार यहाँ पे फिट होता है, उसके बाद ये एक दूसरा एक प्लास्टिक ब्रैकेट दिया है जो सीधा यहाँ ऊपर से स्लाइड होता है ऐसे। ये इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये जो मैंने हैंड पैड कंट्रोलर जो मैंने अभी एक्सेसरीज ट्रे पे रखा है ना, ये इसके ऊपर जाएगा ऐसे। ये इसका होल्डर दिया हुआ है। ओके, सो आई एम नॉट फिटिंग द प्लास्टिक clamps on the leg right now. This is your cigarette car charger wire. Please don't use this. I would not recommend you do that. Now let us set up the 9.25 and the 11-inch telescope tubes on this particular go-to mount, and I will then explain to you the technical parameters of both the telescope tubes. दोनों के साथ क्या आता है और क्या नहीं आता है। Let's begin. ये है आपका telescope 9.25 inch का tube. Let's start fitting it. Take your entire tube. ट्यूब को यहाँ पे फिट करने से पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करिए। इसको उल्टा करता हूं मैं। I keep it here like this. Now when I try to lift it, देखिए ये बाजू लेफ्ट हैंड साइड पे वजन ज्यादा है, थोड़ा राइट पे वजन ज्यादा है। I think this is fine. So ये जो मैंने पॉइंट पकड़ा है ना, that point should be right in the center of your top go-to mount. Before I take the telescope tube and put it on the mount head, मुझे आपको दो चीज बतानी है। ये mount head के ऊपर there are 2 sets of fittings over here. One is a Lossmandy plate fitting, one is a standard dovetail fitting. इसके टेलीस्कोप के नीचे जो प्लेट है, it is a combination of both Lossmandy and dovetail. इसको फिट करने से पहले ये स्क्रू को निकालिए यहाँ पे साइड से और ये बाजू फिट कर दीजिए। आपको ये खोलने के लिए आपको एलन की जरूरत पड़ेगी। ये 2 स्क्रू यहाँ पे फिट करने से जब मैं टेलीस्कोप के प्लेट को जब मैं अंदर से स्लाइड करूंगा ना, तो नाउ दीज 2 screws will directly lock onto the Lossmandy plate. I'll take the telescope tube, carefully I'll slide it inside. I cannot see it. ये मैंने स्लाइड किया और ये मैंने साइड से लॉक किया। परफेक्ट। टेलीस्कोप की OTA को गो टू माउंट के ऊपर लॉक कर दिया है। नाउ लेट्स ट्राई द बैलेंसिंग। बिफोर आई कनेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट अस ट्राई द बैलेंसिंग ऑफ द गो टू माउंट। इसको मैंने अनलॉक किया है, सॉरी अनलॉक किया मैंने, दूसरा एक्सिस भी अनलॉक किया। नाउ आई विल ट्राई टू बैलेंस द टेलीस्कोप। सी मैं जब इसको छोड़ रहा हूं तो देखिए ये बाजू वजन ज्यादा है। ये काउंटरवेट मैंने पूरा बाहर की तरफ लाने के बाद भी वजन बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। क्यों बैलेंसिंग नहीं हो रहा है? क्योंकि ये टेलीस्कोप में आते हैं 2 काउंटरवेट, मैंने खाली एक ही काउंटरवेट लगाया जानबूझ के। अब मैं दूसरा काउंटरवेट लगा के आपको परफेक्ट बैलेंसिंग दिखाऊंगा। लॉक इट। ये आपका दूसरा काउंटरवेट है। बिफोर आई फिक्स दिस, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। नीचे से नट खोला, काउंटरवेट लिया, लॉक किया और वापस ये नट टाइट कर दिया। नाउ लेट अस ट्राई द बैलेंसिंग। वापस आ रहे हो, डेक एक्सिस को अनलॉक करो। मेक श्योर कि आप जब भी इसको अनलॉक करो यू होल्ड द टेलीस्कोप, वरना सीधा एक तरफ गिरेगा। अभी ये बाजू वजन ज्यादा है। आई विल नाउ मूव द काउंटरवेट अ लिटिल इनसाइड एंड देन सी। परफेक्ट। मैं इसको कोई भी डायरेक्शन में रख रहा हूं, इट इज स्टेइंग परफेक्टली वेल। दिस इज कॉल्ड जीरो बैलेंसिंग।
जीरो बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी गो टू ऑपरेटेड टेलीस्कोप। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में दोनों जब वेट बराबर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और जब आपका गो टू माउंट का मोटर घूमता है तो आपके मोटर को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आता है। उनको मोटर को दोनों तरफ से आरे डेक एक्सिस में उसको जब वो गियर जब उसको लिफ्ट या ड्रॉप करता है टेलीस्कोप को तो उसको आसानी होती है। देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द मोटर। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर जीरो बैलेंसिंग इज 100% करेक्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर अप करने का टाइम। ये मैंने सीधा AC/DC अडेप्टर लिया, यहाँ पे पीछे इसका स्लॉट है, मैंने इसको प्लग इन किया है। स्टार्ट। ये मेरा हैंड पैड कंट्रोलर है। ओके, ऑन ऑफ का स्विच है। आई एम नाउ स्विचिंग इट ऑन। इनिशियलाइजिंग। This handpad controller has 9 different slewing speeds varying from 1 to 9. You can move the telescope even in a manual motion by using the handpad controller. Remember, once the go-to is locked, कभी भी go-to को एक बार आरे और डेक एक्सिस लॉक होता है उसके बाद उसको हाथ से धक्का मत मारना। हाथ से धक्का मारने से आपके गियर्स, आपका शाफ्ट, अंदर का मैकेनिज्म खराब होगा। Always use a go-to handpad controller. Enter to accept. Initializing. मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया है। जस्ट इन केस आपने गलती से कोई गलत लैंग्वेज सेलेक्ट किया हो तो डायरेक्टली गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च करना हाउ टू रीसेट माई हैंडपैड कंट्रोलर और हाउ टू रीसेट लैंग्वेज ऑन माई Celestron हैंडपैड कंट्रोलर। आपको इमीडिएट उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, ये चालू हो गया। लेट मी जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज लॉक्ड। आर योर डेक एक्सिस लॉक है? करेक्ट। नाउ दिस इज how your go-to will function. The Celestron's go-to handpad controller has an object database of 40,000 objects. 40,000 is a lot of objects for you to cover the entire night sky. The 9.25-inch optical tube assembly gathers ample of starlight. It has a 2350 mm focal length, which is pretty long enough for you to zoom into planets. इसका focal length 2350 mm का focal length है, which is pretty long enough for you to magnify into planets. You can half the focal length, you can reduce the focal length by using a focal reducer. इसका f ratio है f10. You can further reduce it by half and make it f5 by adding a aftermarket 0.5x focal reducer. इसका light gathering ability compared to the human eye is 1127 times more than what your human eye can absorb. This is a Schmidt-Cassegrain telescope, which means that there is a secondary mirror. This is a secondary mirror. The secondary mirror obstructing the overall area is only 13%. The coating inside the mirror is Celestron's patented StarBright XLT coating, which is perfect for visual astronomy as well as astrophotography. The net weight of the telescope tube's OTA is 9.7 kg. Go-to mount का payload capacity 13.6 kg का है, so you are way below its payload capacity. Now let's talk about the accessories that come with the telescope. Telescope के साथ आपको आता है 1.25 inch का mirror star diagonal that directly connects over here. You get a 6x30 finder scope that directly connects over here. And you get a 25 mm colossal eyepiece that fits right on top of your diagonal. You only get one eyepiece. You do not get a Barlow. You have to buy a range of accessories and eyepieces and Barlows separately. Apart from what you get with the telescope, I will now show how to add additional aftermarket accessories and enhance this telescope from a 1.25 inch accessory model to a 2 inch accessory telescope. Let's begin. This is your 1.25 inch SCT adapter that comes with the telescope. Let me remove that. ये मैंने निकाल दिया. This is an aftermarket 2 inch SCT adapter. We can now directly connect a 2 inch SCT adapter to the threads over here. 2 inch SCT adapter कनेक्ट करने का फायदा ये होता है कि आपका जो पहले होल जो छोटा था ना, ये होल अभी हो गया 2 इंच का बड़ा होल. ये 2 इंच के बड़े होल में आप अभी डायरेक्टली 2 इंच के आफ्टर मार्केट
मिरर स्टार डायगोनल्स कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज एन एंजल आइज 2 इंच मिरर स्टार डायगोनल। 2 इंच मिरर स्टार डायगोनल में आपको एक 1.25 इंच का भी होल आता है और साथ में आप उसको 2 इंच का भी होल कर सकते हो। ये स्टेप डाउन अडेप्टर 2 इंच के डायगोनल के साथ ही आता है। ये 2 इंच के डायगोनल के ऊपर आई विल नाउ कनेक्ट अ GSO 2 इंच ईडी बारलो। ये 2 इंच के ईडी बारलो के ऊपर, GSO के 2 इंच ईडी बारलो के ऊपर आई एम नाउ अटैचिंग एन एक्सप्लोर साइंटिफिक 18 mm 2 इंच आईपीस। अब मैंने बेसिकली किया क्या है, इसमें मैंने टेलीस्कोप है सेलेस्ट्रॉन का, सेलेस्ट्रॉन के टेलीस्कोप के ऊपर मैंने आफ्टर मार्केट SCT अडेप्टर फिट किया, मैंने एंजल आइज का 2 इंच डायगोनल फिट किया और एक्सप्लोर साइंटिफिक का 2 इंच आईपीस फिट किया। ये मैंने अलग अलग ब्रांड्स के एक्सेसरीज इसके लिए फिट किए टू शो यू द इंटर कंपैटिबिलिटी ऑफ एक्सेसरीज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स विद दिस पर्टिकुलर टेलीस्कोप। जिस तरह से मैंने ये आफ्टर मार्केट 2 इंच एक्सेसरीज सेलेस्ट्रॉन के 9.25 के OTA पे फिट किया है, वैसे ही you can buy these aftermarket accessories of all 2 inch category and attach it on the Celestron 11 inch OTA also. One more accessory that we custom manufacture here in Mumbai at our office is a solar filter. ये इसका आगे का डस्ट कैप है, डस्ट कैप के साइज का ही इससे मे बी ½ an inch bigger इसका एक कस्टम मेटल प्लेट फैब्रिकेट करके बीच में हम लोग सोलर फिल्टर फिट करके we can make custom solar filters for the 9.25 and the 11 inch Celestron telescope. We don't have it ready right now, but if in case you ever want a solar filter for your telescope, contact us. We will custom fabricate a solar filter for you at Tejraj and Company. Now, let us mount the 11 inch Celestron OTA on this particular telescope and show you what accessories that comes with. Moving on to the Celestron's 11 inch OTA. Here's the OTA. Now let us fix the OTA on this particular go-to mount. 9.25 इंच में जैसे यहाँ पे 2 काउंटरवेट आते हैं ना, वैसे 11 इंच के लिए आपको 2 के बदले 3 काउंटरवेट की जरूरत पड़ेगी। लेट्स बिगिन। ये टेलीस्कोप को फिट करने के लिए वैसे ही जैसे 9.25 स्लाइड करके फिट किया था, इसको भी वैसे ही स्लाइड करके फिट करना है। ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, सो आई विल रिक्वायर एक्सटर्नल हेल्प। ये 2% जॉब। ओके, डन। लॉक इट। थैंक यू वेरी मच। टेलीस्कोप तो माउंट हो गया है, पर अभी तक इसका जीरो बैलेंसिंग बाकी है। मैंने आपको पहले भी बोला इसमें 3 काउंटरवेट आते हैं, 2 नहीं। लेट अस विद द 3rd काउंटरवेट। पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं ऊपर। इसको खोल दीजिए। टेक योर 3rd काउंटरवेट। ये तीसरा काउंटरवेट आपको खाली C11 के साथ ही आएगा, सॉरी 11 इंच के टेलीस्कोप के साथ ही आएगा। You only get 2 counterweights with the 9.25 and 3 counterweights with the 11 inch telescope. अब करते हैं इसका जीरो बैलेंसिंग। अनलॉक योर RA and deck axis। धीरे से रोटेट करिए, मूव करिए इसको और देखिए कौन सी बाजू वजन ज्यादा है। अभी फिलहाल काउंटरवेट की तरफ से वजन ज्यादा है, सो नाउ लेट मी मूव द काउंटरवेट्स फर्दर इनसाइड। ओके, ट्यूब में भी देखिए when I'm leaving the tube, so tube का वजन ये तरफ ज्यादा है, so what I have to do now is I have to, sorry, ये काउंटरवेट यहाँ पे स्क्रू को लॉक टच हो रहा है, तो let's not move this counterweight। इसको वापस अपने पोजीशन पे डालते हैं ताकि ये यहाँ पे टच ना हो। थोड़ा और नीचे ले लेता हूं मैं, करेक्ट। इसको मैं अंदर डाल देता हूं so that it does not obstruct the counterweight रोटेशन के टाइम पे। ये हो गया, यहाँ पे वजन ज्यादा है। Let's move the counterweights further closer to each other, further closer towards the tube. अब देखिए ये बैलेंस बराबर हो गया है, पर जो ट्यूब का बैलेंस है, जो ट्यूब जो मेरी तरफ टिल्ट हो रहा है ना, उसको अभी शिफ्ट करना है। क्या करेंगे, ये बाजू वजन ज्यादा है, सो आई विल नाउ मूव द एंटायर ट्यूब फर्दर आउटवर्ड ताकि बैलेंस ऑफ वेट वो बाजू शिफ्ट हो। को मैंने थोड़ा सा आगे सरका लिया है, ये मेरा परफेक्ट बैलेंसिंग हो चुका है। मेरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बैलेंसिंग परफेक्ट है। द ट्यूब इज स्टेइंग इन एनी डायरेक्शन, आई एम लीविंग इट। कोई भी डायरेक्शन में रखो तो ट्यूब वो डायरेक्शन में रह रहा है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट जीरो बैलेंसिंग। ये मैंने 9.25 इंच में भी वही एक्सप्लेन किया है। ये इसका 11 इंच का ऑप्टिकल ट्यूब डायमीटर। The focal length of the 11 inch Celestron is 2800 mm.
the F ratio is F10. You can further reduce the F ratio by adding another aftermarket focal reducer of 0.5x. इसका light gathering power compared to the human eye is 1593 times of what our eyes can capture. The accessories that are coming with the telescope is a 1.25 inch star diagonal that directly fits on the existing adapter over here. इसको खोलिए. This is your 1.25 inch star diagonal. Unlock the screw so it can fit properly inside. It can move in. ये लॉक किया. Now 9.25 में जैसे 25 mm का प्लॉसल आईपीस आता था, इसमें 40 mm का Celestron ने प्लॉसल आईपीस दिया है. Because the magnification power is already too high, 2800 mm is excessive high magnification, so you will require low magnification eyepieces for galaxies, clusters and nebulae. Apart from the 1.25 mm mirror star diagonal, the 40 mm eyepiece, you also get a 9x50 finder scope. ये इसका bracket है, bracket के ऊपर directly ये fit होता है, and this is how your finder scope looks on your telescope. Apart from the 1.25 inch accessories, 9.25 में जैसे हम लोगों ने aftermarket accessories fit किए थे, इसमें भी हम वही aftermarket accessories fit कर सकते हैं. Remove this part. Take your 2 inch SCT adapter. SCT adapter fit करने के बाद, take your 2 inch mirror star diagonal. Take your 2 inch ED Barlow. You can put your 2 inch eyepiece on it, or you can remove the Barlow, directly put your 2 inch eyepiece on it, and this is how you can upgrade your telescope from 1.25 inch to 2 inch. Both are very similar models. The only difference between them is the diameter of the mirror. One is 9.25 and one is 11 inch. They both are compatible with the Celestron's advanced VX go-to mount. The 11 inch will require 3 counterweights. The 9.25 inch will require 2 counterweights. These two are perfect telescopes for budding astronomers, even for first-time users, people who have a farmhouse outside the city, and for people who want to do beginner-level astrophotography, who want to begin their journey in astrophotography. This is perfect for them. These two telescopes are lightweight, they are affordable, and they are portable in this particular category. If you go for any other 9.25 or an 11 inch category, they are not as portable as the Celestron's 9.25 and the advanced VX go-to mount. The go-to mount is strong enough to take the load of both the telescopes. Feel free to contact me on WhatsApp. My name is Darshil Patel from Tejraj & Company. My WhatsApp number is 9833974700. Our website address is www.tejraj.com. I hope you guys have liked this video. It has taken us a lot of time and effort to make this video. Please like and subscribe and wait for many such more videos. Thank you very much. Goodbye.